Esteemed Chairperson Talha Sahiba, Talha Sahiba, Ruprekha ji, distinguished members of this audience, members of the family of Osama Talha, friends of the family. I am honored and humbled by the invitation to me to join this evening's tribute to Osama Talha. Among the many mysteries and ironies of life is this, that one as old as I am should have to join in remembering and paying tribute to someone as young as Osama Talha. It is one of those mysteries and ironies which makes one wonder whether there really is a beneficent power that oversees life and creation, or whether there isn't. But we are not gathered here today to delve into the mysteries of the universe. We are here to remember a person who devoted his extremely brief career with passionate intensity to the profession which he had joined with idealism and with a sense of calling. I would like to say that by its very nature, this evening's gathering becomes a celebration of free expression, free thought, free expression, and of course, the free press. I would like to believe that despite all these strains and stresses that the freedom of speech is undergoing in India and in many parts of the world, the spirit of the free press can never be extinguished. I say this both in a mixture of hope and confidence. Hope because it is natural to fear, and confidence because it is so necessary to expect the best. That two stalwart voices from the Indian media are being felicitated and honored today, in Shri Harish Khare and Shri Vinod Dua, is a great felicity. Both of them have been examples of veracity, of staunch tenacity, and above all, of that great quality in journalism, great but not universal, the great but not universal quality of combining free speech with elegant expression. Which reminds me that I forgot to acknowledge and thank Nayyar Sahab for the elegance of his expression. And when I compliment him for the elegance of his expression, I detach myself from the extremely generous things which he said about me. Those I am not endorsing. Parveen Sahiba also was very generous in her words.
and she spoke about, if I heard her right, something about clean hands. Everybody's hands are clean and nobody's hands are clean. हाथ कितने साफ हैं ये साबुन से पूछना चाहिए. ख़वातीन और हज़रात, मैं चेन्नई रहता हूँ. चेन्नई से दिल्ली होते हुए आया, यहाँ लखनऊ आया. हिंदुस्तान के शासन में, हिंदुस्तान के राजनीतिक प्रबंध में चेन्नई और लखनऊ, कभी मुगलों के ज़माने में जो अवध और दक्खन कहलाते थे वो हैं. They are two regional magnetic centers, just as Kolkata and Mumbai are. So these are the great centers of what can be called India's federal intelligence. They represent the people of India as distinct from the leadership of India as it functions from the national capital territory of India. This is not to say that the leaders do not represent India, they do. But their preoccupations are such that the voice of the federal intelligence of India gets to be left to those regional centers for self-expression. I thought I will speak on Hum Hind Ki Awaam, and I will not detain you for more than, say, 10, 12, 15 minutes at the most. And if I cross that point, Parveen Sahiba, please ring a metaphorical bell. When the Constitution of India was being crafted by the drafting committee of which Dr. Ambedkar was chairman, there was simultaneously formed two more committees. One was called the Hindi Translation Committee, the other was called the Urdu Translation Committee. आप जरा उनकी सोच को देखिए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग कमेटी अपना काम सारा अंग्रेजी में कर रही थी, क्योंकि लर्नेड पीपल थे वहाँ जिन्होंने 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 60 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और वो ड्राफ्ट कर रहे थे अंग्रेजी में. पर उनको मालूम था कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान की आवाम को पहुंचना है तो उसके तर्जुमे होने चाहिए ताकि लोग समझ पाए. तर्जुमे हो बहुत उम्दा है. Just take we the people. We the people, that phrase was borrowed from the US Constitution, from the preamble of the US Constitution. And it is an excellent case of borrowing. And what follows, I'm not comparing, much less setting them in competition, the two preambles. But our preamble is a lyrical document which has been amended just once. And that constitution, that preamble of the constitution begins with these words, we the people. अब we the people जो है वो कई किताबों का शीर्षक बन चुका है. It is a very handy and a telling phrase for any writer who is writing about India. Because the writer wants to identify himself with the people, to speak with and on behalf of the people. तो इसके जो तर्जुमे हैं, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग हम सोचते हैं, and when we say those words, it takes on a completely different power. और संस्कृत में it's an extraordinary translation. Vayam Bharatasya Janaha. Vayam Bharatasya Janaha sounds like sounds like what it is, a covenant cast in stone by the people of the people. And in Urdu,
हम हिंद की आवाम. Now, taking ownership of the preamble, taking ownership of the constitution by Hum Hind Ki Awam has not taken place quite as much as Baba Saheb would have liked it to, or quite as much as a translation would enable us to. And I think this is for the reason हिंद की आवाम 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक, भरोसा. हम हिंद की आवाम विश्वास करते हैं. भरोसा उसका स्वभाव है, एतबार उसकी तबीयत है. भरोसा, विश्वास, एतबार. This comes naturally to us. And when somebody lets you down, first you are in a state of disbelief, shock, and then you say this has to be an exception. But then when it is happening repeatedly, तो एतबार उठ जाता है. So this I feel is one of the great misfortunes of India. That this natural capacity of the people of India, हम हिंद के अवाम, to feel confident, भरोसा रखने की जो तबीयत है, वो बदल गई. The other great faculty of the people of India, Bharatस्य Janah, is to get distracted very easily. Diversion बहुत आसानी से हम लोगों को बहला देता है, यूँ कहिए बहका देता है. हाल में मैंने सीताराम येचुरी साहब को तकरीर देते हुए सुना चेन्नई में. वो कह रहे थे कि उन्होंने अपना करियर शुरू में थिएटर से करना चाहा, क्योंकि उनके फैमिली के कई लोग सिनेमा, तमिल में सिनेमा में थे. वो बल्कि उनकी पैदाइश चेन्नई में हुई थी. तो उन्होंने कहा कि वो एक तमिलनाडु की एक फिल्म डायरेक्टर है. सीताराम येचुरी को चीज़ कही वो कभी भूल नहीं पाए. तमिलनाडु, as you know, is very fertile in creating cinema legends. तो इन शख्स का फिल्म डायरेक्टर है कि अगर आपको सक्सेसफुल फिल्म बनानी है तो उस फिल्म को एक काम करना चाहिए, और सिर्फ एक ही काम करना चाहिए. 2.5 घंटे तक सिनेमा जो देख रहा है उसकी सोच को बंद कर देना चाहिए. He should not think for 2.5 hours. He should just watch. तो हमारी सियासत ने जब काम शुरू किया था आज़ादी के पहले, तो हम सबको सोचना सिखाया था, और बाद में सियासत ने कुछ ऐसी एक अपनी ड्यूटी देखी है कि वो हमें सोचने की शक्ति को बंद करने की कोशिश करते हैं. 1.5 घंटे तक आप 2.5 घंटे तक आप सोचिए, सिर्फ सुनिए और घर जाइए, सोचिए. तो डाइवर्शन और डिस्ट्रैक्शन have become tools of self-empowerment in the hands of a certain category of politicians. Not all, yes. But जयप्रकाश नारायण को मिली, लोकनायक की उपाधि उनको मिली, और लोकनायक सच में अंधेरे में एक प्रकाश, जयप्रकाश. ये किसके बारे में कहा जाए? कितनों के बारे में ऐसा कहा जाता है? सिनेमा घर अंधेरे में होते हैं, और सिनेमा घर में जो प्रकाश है सबको they are meant to make us stop thinking. But Jayaprakash was one Prakash who made the most unthoughtful person extremely alert. Alert to her rights, to his rights, alert to her duties, to his duties. तो जयप्रकाश की नस्ल के पॉलिटिशियन की खत्म नहीं हुई, संख्या कम हो गई. विश्वास, भरोसा. दूसरा, आसानी से बहल जाना. और तीसरा,
common to us, भय, डर। ये भी आप देखिए, हम उनकी आवाम ब्रिटिश सरकार की बात करने में आप बहुत इस बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री सो मच इन द पास्ट, 70-80 साल पुरानी बात, फिर भी इट्स वर्थ रिकॉर्डिंग कि डर से सबको लोकमान्य तिलक ने, नेताजी ने, शहीद भगत सिंह ने, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस आंदोलन की नेतृत्व सब गांधी ने डर से दूर थे। वो जो एक शक्ति मिली, उसी शक्ति के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। वो जो सोचने की, निडर सोच की जो शक्ति थी, कॉन्स्टिट्यूशन का रूप ले आई। कॉन्स्टिट्यूशन के 100 के करीब अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और होंगे। कई तकनीकी अमेंडमेंट्स हैं, पर कई वजनी अमेंडमेंट्स भी हैं और आगे भी होंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए सीक्रेट डॉक्यूमेंट विच कैन नेवर बी, इट कैन बी, इट हैज बीन अमेंडेड, इट विल बी अमेंडेड। लेकिन उसने जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र किया है, फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया है, वो हम हिंद के आवाम अपने अंदर से पहले से जानती आई। हालांकि किसी ने उस सेक्शन को पढ़ा नहीं होगा, आर्टिकल को पढ़ा नहीं होगा, फिर भी जानती है कि हमारे राइट्स उसके द्वारा सुरक्षित हैं। आज इन 3 चीज़ों को हम कैसे झेलें, ये हमें सोचना है। विश्वास को कैसे वापस लाएं, बहल जाने, बहक जाने की हमारी जो वीकनेस है, उससे हम कैसे दूर रहें और भय को कैसे इन जगह भगा दें। भय होना चाहिए खतरों से, और हमारे सामने कई खतरे हैं। 2-3 का मैं उल्लेख करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। टेररिज्म एक बहुत बड़ा खतरा है। टेररिज्म का सामना हमें डर से नहीं, हमें एक अकल से करना चाहिए, तैयारी से करना चाहिए। फैनाटिसिज्म एक खतरा है जिससे कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका मुकाबला करने की हमें तैयारी होनी चाहिए। और तीसरा, पोलराइजेशन। टेररिज्म और फैनाटिसिज्म से जो पोलराइजेशन हमारे देश में चल रहा है, वो एक बहुत नंबर 1 खतरा है हमारे देश का। और मैं आज इस पोलराइजेशन के मुद्दे को लेकर एक अपने दिल की एक बहुत बड़ी फिक्र के बारे में आपसे 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आसाम बहुत दूर है हमसे, चेन्नई से तो और भी बहुत दूर है, लेकिन ये जो रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की बात चली है, 51 में सबसे पहले चली है, ये कल नहीं बटी, 51 में चली है सबसे पहले। फिर आसाम अकॉर्ड, राजीव गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप, उस अकॉर्ड में भी this point was brought on board that there are genuine concerns among the people of Assam that illegal immigration is going to change the demography of Assam, is going to make the residents and inhabitants of Assam fear for their own rights, their own opportunities. So this anxiety was taken on board, and a certain arrangement was contemplated for the future. Tarun Gogoi का chief minister, सरकारी बदली, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे, कई साल बीते और अब वो बात कैसे उठी।
So I just want to say this, that what is happening in the state of Assam on the subject of citizenship, उसे हम हिंद के अवाम वयम भारतस्य जनाः, हम भारत के लोग उसको गौर से देखें, बहुत गौर से, सिर्फ फ्रंट पेज में आया पढ़ा, अरे ये क्या हो रहा है, फिर कर अगला पेज देखा, दूसरा तीसरा पेज, तीसरे पेज में हम बहला गए, बहक गए, ये बात नहीं। It's probably the litmus test of the efficacy of our constitution. I just want to say this. If 4.5 million people are being talked about, we have to really see, क्या वाकई 4.5 million people Bangladesh से आए? If Fakhruddin Ali Ahmad Sahab's nephew finds is not on the national register of citizenship, if Anwara Taimur finds she is not on the national register, she is they are one of the 4.5 million. तो ऐसे और भी होंगे। एक और जो बात चली थी उसको आज हम देखें तो there are 16 kinds of identifications, IDs, 16 pieces of paper कहिए, जिनमें से एक भी अगर किसी के पास हो तो she or he is entitled to become a citizen or is a citizen. तो इन 4.5 million कितनों के पास ये 16 है, कितनों के पास नहीं है, इसको ईमानदारी से देखा जाए, विश्वास वापस लाया जाए। दुनिया भर में 10 मिलियन, आज ही मैंने मिर्जा गोपाल जयाल का एक लेख पढ़ा, उन्होंने बताया कि 10 मिलियन लोग हैं दुनिया भर में स्टेटस, उनमें हम 4.5 मिलियन ऐड करने वाले, तो मामूली बात नहीं, इट्स इंटरनेशनल मैटर। इससे जुड़ी दूसरी बात, सिटीजनशिप अमेंडमेंट ड्राफ्टिंग कमेटी, बाबा साहेब आम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अल्लाडी अय्यर, ये सब क्या सोच रहे हैं? अमेंडमेंट, जो संविधान, जिस संविधान में रिलीजन का नाम है, where God comes in only in the text of the oath of swearing in and in no other form, because the constitution framers were so democratic. They said if a person does not want to take an oath solemnly affirming, अगर उसको खुदा पर ही टिकना है तो अच्छा ठीक है, let there be a name of mention of God as an alternative. That is the only reference to God in the constitution of India. The only way in which religion comes in. That constitution, which provides citizenship not by bloodline descent but by time and date of place of birth, that constitution is today being sought to be reviewed by a citizenship amendment bill, which is bringing in religion into the heart of citizenship. ये बहुत बड़ा खतरा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा के लिए। And I want all of us to get very serious without anger, without malice, without bias, with respect, with humility, with sincerity. I would urge the lawmakers in India to look at this amendment bill 100 times before they proceed with it. Because citizenship which is not religion neutral in India is alien to the soul of India,
the soul which belongs to Gautama the Buddha, Dara Shikoh, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar. Friends, Parveen Sahiba did not bring the metaphorical end. So I will bring it for myself and just conclude by one recollection. तंबाकू बड़ी खराब चीज है, सिगरेट बीड़ी से दूर रहे अच्छा है। लेकिन मुर्शिदाबाद में, मैं कोलकाता में काम कर रहा था तो मुर्शिदाबाद जाना था। मुर्शिदाबाद में बीड़ियाँ बनती हैं, नाजुक उंगलियों से वो बीड़ियाँ घुमाएं बनाई जाती है। मासूम लड़कियां और उनकी बहुत ही छोटी उम्र की माएँ वो बीड़ियाँ बनाती हैं। मुंशी आके पत्ता देता है, तंबाकू देता है, एक निकराज कहना चाहिए, कैंची देता है। लखनऊ में निकराज कहना चाहिए, कैंची नहीं। बनाओ, एक बीड़ी जरा बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए, मोटी हो जाए, पतली हो जाए तो सारा का सारा खत्म। बहुत मेहनत से बीड़ियाँ बनती है, अनब्रांडेड। तो मैं जब गया अंधेरे एक घर में माँ बीड़ियाँ वो बीड़ी बनाए, तो मैंने पूछा, अच्छा बच्ची तो स्कूल जाती है? बांग्ला में बोल रहे थे, अभी ठाकुर मैं जाके आती हूँ। किताब लाई, इतनी सी किताब जिसको कि बुरे पेपर से कवर करके रखते थे ना बच्चे पुराने ज़माने में, आजकल शायद करते हैं या नहीं पता नहीं। ब्राउन पेपर का एक छोटी सी किताब, जिल्द, शायद देखो, मैंने देखा, खोला, भारत का संविधान। मुर्शिदाबाद में बीड़ी की झोंपड़ी में भारत का संविधान। मैंने कहा, और आप यकीन नहीं करेंगे, उस बच्ची का नाम अनवरा था। अनवरा, वहाँ बांग्ला में कहते हैं ओनोरा। ओनोरा कितनी चाहना, कितनी की હોય છે? हाँ सर, हमें जानी तो पढ़ सकती हो? हाँ सर। मैं एक ओहदे पे था, मैं जमीन पे बैठा, ओनोरा खड़ी हुई, किताब को खोला और उसको देखे बगैर, क्योंकि उसको मुंह ज़बानी याद हो गया था, उसने पढ़ना शुरू किया, We the people of India. We the people. ख़वातीन हज़रात, हम सब आज ईश्वर से प्रार्थना करें, ओनरा एक दिन हिंदुस्तान की सदर बनेगी। उसके लिए विश्वास वापस आना चाहिए, उसके लिए भय दूर होना चाहिए, और उसके लिए बहकाने वाले, बहलाने वाले सिलसिले शर्म के मारे दूर हो जाने चाहिए। परवीन साहिबा, मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं कि मुझे आज यहाँ लखनऊ में बुलाया। बहुत एक खुशी चीज़ हुई, बहुत एक खुशी की चीज़ हुई। मैं राजभवन जा रहा था, जहाँ की मुझे ठहरने का मौका मिला हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की भलबन साहब और उदारता की वजह से। तो गेट पे मैंने देखा, गेट पे लाख लिखा राजभवन, रोमन में राजभवन नानी और राजभवन उर्दू लश्करी का। इतनी खुशी हुई मुझे उन तीनों को देख, और भी खुशी हुई जब राज्यपाल राम नायक जी ने मुझे बताया कि उन्होंने ही इसको लगवाया है उर्दू में हमारे लिए। इसलिए भाइयों को बहुत अंधेरे में भी प्रकाश चला।